Main. So we'll discuss how many steps and how can we clear it. So कुछ details में discuss करें. ठीक. So I think your screen सबको visible है. ठीक. So the starting line. आप preparation begins long before you open a textbook. It begins in the mind. So first we have to prepare in mind before we start the preparation. And then one more realistic one. So it's like this cricket marathon. Don't sprint like T20. So to set daily goals and little micro goals that can be easily achievable. So that can give you the confidence to go forward. Like you all know that how the competition is. 10 lakh students appear annually. So actually competition is not with them. Competition is you versus. So it is your consistency. Focus entirely on the daily commitment. That's why to achieve your everyday micro goals and try to build little bit every day how much you can do effort. See, कुछ रोज कुछ ना कुछ daily goal setup करो and try to achieve it. Not try to like backlog. Yeah. And that should be realistic. Okay. Next, some there is some eligibility criteria. So if you're preparing JEE, don't think that the board is like don't give priority to board is like not in your goal, but in board there is 75 marks. Board rule candidates must secure 75 marks, percent marks in the class 12 board exams. Okay. Hence, what is also important. So you have to equivalent focus on the board. The number of attempts. A student can attempt JEE for 3 consecutive years, starting from the year they pass class 12, and there are 2 sessions per year, making it 6 total attempts. Means when you're studying class 12, in that year you can give, and after that, 2 attempts. So every year there is 2 attempts, 2 sessions. So almost 6 attempts you can give. Yeah. So time period will be shorter. Of course, we have to focus. We have to know that there is chances. You have opportunities, so you have to take it, not neglect it. Some combination, physics, mathematics is mandatory, and along with chemistry will be there. Biology was that is not there. Physics, chemistry, and maths. एज लिमिटेज का कुछ क्राइटेरिया नहीं। तो हम लोग कैसे अब टेल रूटीन क्राइटेरिया कैसे डिजाइन करते हैं उसके बारे में देखते हैं। हाउ फर्स्ट वी ब्रेक आउट 24 hours till after 8 घंटा sleep, deep sleep. So if your memory is mark, how can you remember? So दिमाग को पूरा शांत पीस करना ठीक है, नहीं तो तुम नहीं कर पाओगे। 6 to 8 आवर फोकस, अभी इसको भी हम डिस्कस करेंगे 6 to 8 आवर्स को कैसे करेंगे। उसका 4 to 6 आवर सबका क्लास और स्कूल रहता है ठीक है। 6 to 8 आवर्स सेल्फ स्टडी भी ऑल लगता है ठीक है, इसका कोई हम लोग कम नहीं कर सकते ठीक है। क्लासेस तो अगर फिजिकल एक्सरसाइज लिटिल बिट 2 to 3 hours is much, not able to do that much ठीक है। आधा घंटे तो 45 मिनट्स का लिए बहुत है और ठीक है। 6 to 8 hours कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज, यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं ठीक है। एक्सक्लूडिंग कोचिंग ओनली फॉर सच स्टडी ठीक है। हम लोग फिर 6 to 8 आवर्स में कैसे पढ़ेंगे उसको भी देखेंगे। प्रोमोट टू टेक्निक ठीक है। 15 से स्टार्ट 10 मिनट्स 50 to 45 to 50 मिनट्स स्टडी टाइम 10 मिनट का ब्रेक ठीक है। हाँ, टेस्ट रिहर्सल रहता था जस्ट ओनली नॉट ट्रांसलेटिंग, ट्राई टू राइट, ट्राई टू सॉल्विंग क्वेश्चन ठीक है। नेवर स्टडी वन सब्जेक्ट फॉर ए होल डे, रोटेट टू कीप द बेनिफिट्स ठीक है। 3 सब्जेक्ट है 3 वैरायटी, तीनों को कंटिन्यूअसली चेंज करते करते पढ़ते रहो। एक ही सब्जेक्ट को पूरा दिन करोगे तो
ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लगा, अच्छा था वो मेरे। ठीक है। स्पेंड 50 मिनट्स प्लानिंग टुमारो नाइट का, रात में सोने से पहले 15 minutes write in the diary that what kind of you for tomorrow, what are the subjects you will study, what are the topics you will cover, you have to plan. नेक्स्ट आता है सिलेबस को कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसमें हाई वेटेज होता है जिसमें मोस्ट लाइक टॉपिक्स आर फ्रॉम 12 से 60%, 12 टॉपिक्स, 11 से 40% you can say। और नया चैप्टर को कभी लास्ट के 2 महीने के लिए छोड़ता हूँ मैं, और ट्रैक कॉम्पिटिशन, like tracker or like you have to solve question time to time and prioritize master and fundamental concept over solving 500. It can be much higher, not 500, minimum 500 answer. Concept, you have to clear the concept, that is important. Next is mechanics. First you have to cover, so just synchronize how it covers. The first one is mechanics. Foundation of physics. Do not pass through kinematics and analysis. Spend time understanding free-body diagrams, particularly as they apply to us. Free-body mechanics, if you jump on free-body diagram, you will not clear the concept, then you have to suffer whole the 11. So analyzing free-body diagram for analyzing is so much important. So try to catch the concept clear. फिर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसमें क्या है, there is massive high voltage interest to because enabling Gauss law का जितना एप्लीकेशन है, सॉल्व उसको को जितना एप्लीकेशन है, जितना वैरायटी है, सबको करना है, ठीक है। खाली फॉर्मूला नहीं करना है, पूरा कॉन्सेप्ट करने के लिए क्वेश्चन कॉन्सेप्ट चाहिए, फॉर्मूला से नहीं। फॉर्मूला सॉल्व करने के लिए, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं है, फॉर्मूला कैसे पुट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स होता है बहुत छोटा चैप्टर लेकिन हाई स्कोरिंग होता है, ठीक है। With marks in high position, like you have less time, high marks. Okay. Now physical chemistry, like mathematics, dislike mathematics, yes. Dedicated formula copy practice time numericals to literature. फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो न्यूमेरिकल किसी क्वेश्चन में थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इक्विलिब्रियम, ठीक है। फिर एक ऑर्गेनिक मैकेनिज्म समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्लास कुछ नहीं हो पा रहा है, then you can go for knowledge, but first you know little bit also mechanism, HUC network files, ठीक है। चीजों से अच्छे से करना है। इनऑर्गेनिक टेक्स्ट से जो पीरियड टेबल तो पहले पूरा याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आ गया बॉन्डिंग का, ठीक है। बॉन्डिंग हो गया, जो जो एक्सपेक्टेशन एक्सप्रेशन एक्सपेक्टेशन रहते हैं उनको भी करना है, ठीक है, छोड़ना नहीं। नेक्स्ट है अलजेब्रा, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट चेंज, मैट्रिक्स हुआ, डिटर्मिनेंट्स हुआ, बहुत इजी सब्जेक्ट है। सीक्वेंस सीरीज जी नहीं, मतलब स्कोरिंग सब्जेक्ट है, कम टाइम में हो सकता है, ठीक है। अलजेब्रा को चीज करना, फिर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। फिर है ना कैलकुलस, कैलकुलस में लिमिट हो गया, लिमिट, कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबिलिटी, एओडी, डिपेंडेंट इंटीग्रल, इंडिपेंडेंट इंटीग्रल, ठीक है, सब करना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हो गया स्ट्रेट लाइंस, सर्कल्स। और फिजिक्स में कौन कौन सा टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट करंट इलेक्ट्रिसिटी का, सेकंड वन मॉडर्न फिजिक्स, thermodynamics, optics. Start to know we can put rotational motion, electrostatics, magnetism. In chemistry, chemical bonding, coordination, compound, geology. Add to electrochemistry, solution, amines, P block. Mathematics में 3D geometry, vector, matrices, determinants, different integrals. ठीक है। That means sequence series, AOD, differential equation. I will share the PDF with you. बैकलॉग सबसे प्रॉब्लम होता है, बैकलॉग को कैसे क्लियर करें,
So maybe it's holding current coaching school topics to clear all the class, creating an endless cycle. Allocate only 15 to 20% of your daily study time specifically for the listener. As it says, have an advantage self-study time. This means almost 1 or 2 hours have to be perfectly. 2 hours, I think. It's 6 hours to be study, 2 hours for backlog. Okay, 8 hours study, 3 hours for backlog. Okay. Backlogs, target backlogs that are prerequisites for current online to mechanics में अगर एफपीटी एनएलएम क्लियर नहीं है तो मैकेनिक्स में बाकी सब चैप्टर चैप्टर करने में बहुत पड़ता है तो फिर कुछ जब बैकलॉग उसको पहले क्लियर करना है इस वीकेंड सिमिलर रिपोर्टिंग कर लेंगे सैटरडे संडे को वीकेंड को बैकलॉग क्लियर करने में ज़्यादा टाइम दे सकते हैं उस टाइम स्कूल कॉलेज कोचिंग सब छुट्टी रहती है do not aim for 100% different backlog chapters initially seek the basic formulas and previous तो बैकलॉग कर रहे हैं so, उस टाइम ऐसा नहीं कि पूरा चैप्टर ही करना है पूरा चैप्टर करने में तो जो मेन कॉन्सेप्ट है जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है कि नेक्स्ट चैप्टर में लगेगा वो सब करना बेसिक उसके बाद में हम लोग स्कोर थोड़ा थोड़ा टाइम दे सकते हैं अच्छा पहला फर्स्ट वन टू मंथ पूरा सिलेबस खत्म करना है फिनिश फिनिश एंड रिवीजन 5 से 8 में फिर 9 से 10 इसमें फिर पूरा पीआई करना है लास्ट मंथ मॉक टेस्ट करना है मेरे बने हुए थे रिवीजन फ्रेम 137 ठीक है इसमें क्या था day one after completing all the syllabus like from October November that time ठीक है initial learning and problem solving ठीक first कुछ 15 minutes इसकी नोट तो नोट्स है फॉर्मूला से उसको रिवाइज करना ठीक लास्ट में मिनी टेस्ट हर वीकली टेस्ट करना ठीक तो पहले जो कंसेप्ट क्लियर है थोड़ा बहुत उसको देखना है ठीक है उसको नोट्स शॉर्ट नोट्स देखना है उसके बाद क्वेश्चन करना है ठीक this people are like let's take care about this is the important protective ground and physical maintenance. JEE preparation is a psychological training. Severe burnout can bring months of hard work right before this. So मेरा बहुत दोस्त है जिन लोग प्रिपरेशन बहुत अच्छे है उनसे भी अच्छी तरीके लास्ट टाइम क्या हुआ इतना ज्यादा फिजिक्स मतलब मेंटल हेल्थ को और फिजिकल हेल्थ को क्या होता है अवॉइड करने लगे हम लोग लास्ट में एग्जाम के टाइम अच्छे से एग्जाम नहीं देते ठीक है so do not sacrifice your sleep with this mentality fresh every day wake up you will be fresh okay? Avoid comparing your mock scores with facts comparison नहीं करना खुद से खुद का कंपेयर आज जितना भी कल उससे थोड़ा ज्यादा करना बाकी दोस्त प्लेयर कौन क्या कर रहा है कौन कंपेयर होता है डिस्काउंट फ्रॉम सोशल मीडिया फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल मीडिया से तो रहना एक्सेल दे दो take 1 year that is enough and 1 year like nothing will change ठीक है जैसा नहीं कि तुम सोशल मीडिया में कर रहे हो दुनिया पीछे वैसा next one is physical maintenance English yes that's what I've discussed in the earlier 30 minutes to 45 minutes physical activity करनी है ठीक वॉकिंग स्ट्रेचिंग होम वर्कआउट ठीक है जिम में वैसा नहीं कि जिम चले गए और पानी पीते रहना हाइड्रेशन नहीं है ठीक है और हर पढ़ने के बाद छोटा सा ब्रेक लेना ठीक है लास्ट नॉट द लिस्ट it does not matter how slow you go as long as you do not stop okay? तो हम लोग को कंटिन्यू करना कंसिस्टेंसी तुम ज्यादा पढ़ लो आज लोग बुक नहीं खुले से लगातार करना ठीक है इट्स योर टाइम ठीक है उसके बाद हम लोग और वीडियो बनाएंगे पूरा चैप्टर वर्क कितना कितना ठीक है आज के इतना ही बस